And the winner is General Ian Cardoso. The women of the army, the armed forces. Behind every successful man is a very surprised woman. However, we do what we do because we have their support. And when I was in the academy, we had the hero of Dograe, Brigadier Desmond Hay, and he said, battles are won or lost in the mind before they are won or lost on the ground. And somebody quoted Dr. Helen Keller, and what she said was, life is an adventure or it is nothing. Thank you, Ruby. Good evening, everyone, and good evening, sir. Thank you, Dr. Batra, for giving me this honor, really privileged to be here with you and to share the stage with you, sir. Nothing is impossible, it says. And I'm at a loss of words after all the wonderful things that Akshay and Dr. Batra have already spoken, and after we heard him speak. What can I say? All I can say is life is amazing, life is beautiful, but sometimes in life amazing things don't always happen. And when that happens to us, many of us, most of us, just fall away, fall down, and we become bitter, we blame, we curse, we pity, and we don't have the ability to stand up and carry on. And then there are some of us, some of people like him, who show us how we can do that and make life amazing. And thank you so much again for giving me this moment. It's all about collecting experiences, and I did one today. Thank you. Good evening, everyone. I'm honored to share the dice with sir. Really blessed, and I salute your spirit, sir. मैं बिना प्रिपरेशन के आया हूँ, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ है, पर जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा। दिल से ये है कि जितने भी हम सब यहाँ मौजूद हैं और मेरे जितने कलीग्स हैं, मैं भी, सारी ज़िंदगी हम कंप्लेन में निकाल देते हैं, शिकायत, नाउमीदी, और जब ऐसा कुछ हम देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आई एम ग्रेटफुल डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो नथिंग इज इम्पॉसिबल आपने मुझे सिखाया था सर। मैं आपके पास आया था एलिमेंट लेकर के सर,
और एक कस्टमर होता ना, जैसे जब किसी के पास भी जाते तो एक चीज़ के साथ दूसरा फ्री लेने के चक्कर में होता, तो मैं भी इनके साथ गया था, मुझे साइनस थी, तो बीच में मैंने एक और पॉइंट डाल दिए सर के, सर कुछ हाइट बढ़ने के लिए मिलेगा क्या? तो इन्होंने कहा था ना, कद बड़ा ना पद बड़ा, जो वक्त पे खड़ा वही सबसे बड़ा। वो दिन है, आज का दिन है। हाइट तो नहीं बढ़ा, पर पता नहीं छोटी छोटी क्या गोलियां दी थी इन्होंने। लड़के के साथ साथ लड़की वाला रोल भी कर रहा हूं मैं। सो सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। थैंक यू सो मच। एंड सर, वंस अगेन थैंक यू, प्लीज, थैंक यू सो मच। Well, the next award will go to. Before that, I want to say, Dr. Batra Saab, you are an amazing person. It's the 12th year, and you've reminded me that I've been coming here all these years for these magnificent awards. And Dr. Batra's Positive Health Hero 2018 is Kiran Nayak. Let's watch the debut. Thank you so much, Dr. Batras and sir here, and I'm so happy. Same time, ज़्यादा feelings है, तो अभी physical handicap, female to male transgender, आदिवासी, ये troubles में मैं बाहर आए, तो इसे मेरा जन्म इस तेलंगाना हैदराबाद में, मैं अभी प्रॉपरली बेंगलुरु में स्टे कर रहे, ट्रांसजेंडर डिजेबिलिटी को साथ काम कर रहे, तो मैं फर्स्ट टाइम इधर अवार्ड लेके तो आए, तो बहुत खुशी है। एंड फ्यूचर में मैं ज़्यादा डिजेबिलिटी के साथ काम करने के, रूरल एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वो काम करने के मैं फ्यूचर का मेरा ज़्यादा गोल्स है। फॉर ज़्यादा थैंक्स बोल सकता है सर। आई एम हैप्पी विथ यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Kiran, congratulations. I'm extremely honored to be standing besides Dr. Batra and Akshay, and these awards mean a lot to me. And looking at what Kiran just spoke, I could understand he comes from the south region, he's trying to express himself. But I could get the gist of the whole conversation that he seems extremely pleased at the love and the warmth, but you deserve it. You deserve it. We are so proud of you, Kiran, so proud of you. And really, honestly speaking, Dr. Batra, you're doing something which is absolutely right when you say hashtag nothing is impossible. See, when you talk about disabled people, I am of the opinion that these people are more
more able than all of us. I don't think the word disabled should be ever used for them. They're more able than all of us, and I really mean this from the bottomest pit of my heart. There's been a question in my heart and mind, is there God? It's debatable. Is there God or is there no God? I've been thinking, I've been talking, many of us sometimes question this when you're struck with a lightning bolt out of the blue, when you're faced with a lot of problems. But looking at these people, I have come to this conclusion, I don't know, but I feel and sense His presence when I see these people. I feel God is there when I see these people. I don't think this kind of motivation can come easily to survive against all odds. Sometimes you do feel rejected and rejected, but then when you see these people, you feel life is worth living. It's a great life. Dr. Batra, I can't thank you enough. God bless you. And Kiran, you're absolutely fantastic. May God bless you and your family with all the happiness in the world. We're so proud to meet you. Thank you so much, guys. Thank you. Let's have some fun now, and let's watch another performance by the wonderfully talented Urja. So please join us. I'd also like to make Dolly sitting so strategically that you can't pass without paying your tax. I'd also like to call on stage someone who's helped. Sorry. So I think what's important with the award for all the awardees is the cash check of 1 lakh that they get. And I'm so thankful to some of my friends who've come forward in support just on a simple WhatsApp message. So thank you to some of them. One is Mohit Mutreja, who couldn't be here today. So thank you, Mohit. And the second is Mr. Sampat Chaudhary from Ahmedabad, and his son Shripal is here. Shripal, please join us on stage to give away the next check. Thank you. May we have the envelope. And the next award goes to, good evening ladies and gentlemen, and the next award goes to Sabri Venkat. Good evening. First of all, I would like to thank Dr. Mukesh Batra sir and Badra's Foundation for giving me this wonderful opportunity. I'm extremely privileged to be here, and work hard, work with determination, with self-confidence. Come out of the shell in which you have locked yourselves up. Nothing can stop you and nothing is impossible. I hope this platform would help thousands and thousands of people. Thank you. It's a privilege to be here.
since you come from Coimbatore, so I'm going to say something in Tamil. உங்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. So seriously, it gives a lot of positivity, whatever you guys do out here. This is my second year, and I'm going to make sure that I'm going to be a part of this event every year. Hereby. Thank you. Well, at the expense of being repetitive, because everybody's saying the same things, similar things, but this is just so very inspirational. When you see that there are people who could have gotten away with an excuse that, you know, we can't do anything, and they actually use it as a strength, and they come out stronger and better and bigger. Very good. And thank you, Dr. Batra. Thanks, Akshay, for inviting me. It's the first time I've come here, and I'll make sure I'm going to come here every year for sure. Very nice. Thank you so much. First of all, thank you, Dr. Batra, and thank you, Akshay. But this is an amazing moment because you realize that you've been living your life as a lie, because you always find problems with what is going on. And of course, as a writer, one of the few things that we are always good with is supposedly words. And I remember the words of Mark Twain, who said that it is not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog that's more important. And this young man brings that entire philosophy completely. It's stark in front of us. So thank you for giving us the opportunity to be here on stage with this young man. Thank you. I don't need promises. I was joking with Ashwin. I said, you're the only one who hasn't said you'll come back next year. So make sure, I hope that some of these stories will inspire you to write something on them someday. I should take half a minute more and announce that your father and I are about to take out a book together, which hopefully we plan to bring out next year, I think, which is called 13 Steps to Bloody Good Health, to which I joked with Dr. Batra. I said, if anyone sees Ashwin Sanghi, the last thing they'll do is buy this book. So you'll have to be in front. Thank you, Ashwin. So again, I hope you'll write something and help us with some writing on the stories. I hope you'll come back next year, and I hope you'll come back with the check. I must say something publicly about my dear Zayan, is that every time we've called on him for any help with the awards, he's always been there. And he's always been extremely helpful, and it's something I acknowledge and I deeply appreciate. Thank you so much. Thank you. Please. So, I just want to say something about my friend before that, you know, money talks and wealth whispers. So that's Akshay right there. Very sweet guy. That's why we do what we do for you. Okay. Dr. Batra's Positive Health Hero 2018 is Devika Bhojwani. Woohoo! I'm so excited about that too.
today at lunch. I actually believe that what I was doing was nothing compared to all of them. So first of all, a big hand to all the awardees, Dr. Batra, you've chosen. I thank you for making me a part of it. Mine was a personal journey. I'm grateful to every woman who gave me the opportunity to help her. And I believe that all of us have that power within us to turn the negative into a positive. I also believe that every woman in this country is special. And why shouldn't she have the same chances that all of us have? So I'm driven by the fact that that woman, whoever she is, has a family, has the desire to be whole again, has the desire to be well. And I have been put in that position where I was given the gift of cancer, which opened my eyes and enlightened me and enhanced my life in the service of these women. Thank you for acknowledging that. Thank you, Zaid. Thank you, both the Batras. Devika Auntie, I'd just like to say something to that truly, I've known Devika Auntie ever since we were kids, and you know, these are altruists in their two forms where, you know, they go above the call of duty, even at the risk of themselves being in the line of fire. They think about others. They don't make them like you guys anymore. And sometimes I question myself as to where have all the cowboys gone. I can see a few cowboys in the audiences here, like Shatru uncle out there, definitely. And of course, Devika Auntie and the Mr. Bhojwani out there, supported like a true cowboy. You know, I just have to say that, you know, God actually is very strange. He tests people in strange ways where, you know, normal people are made happy because God knows that they can't handle it. And God tests those people who can actually handle pain and grief better, and I think He loves them more. So I'm going to give it off to all you guys to set the example forward for the rest of humanity. Thank you so much. It's such an honor being amongst this crowd and people. Thank you. Thank you once again. For our next award, I'm going to now call so much, sir. Please join us on stage. It's a little bit of a tongue twister. Good evening, ladies and gentlemen. Well, thank you so much for calling me here. It's a great privilege and great honor. I can't promise whether I'll come next year, but I can tell you one thing, that it seems like coming from Lokhandwala to this place, it seems I started last year, the last year's program, just about made it for this one. I think I deserve a bravery award. And I, for a moment, thought I'll get it posthumously. Well, Dr. Batra's Positive Health Hero 2018 is, yes, it's a bit of a tongue twister. Kausalya or Kaushalya? It's written Kausalya Periyaswamy. That's right?
us. And I am actually very happy to see the different kind of the person before me. In that itself, actually giving my life to be more better than better. Actually, every day I'm learning a lot. This is also day, and I can learn in my life to other life how actually for to be. Maybe that's the reason I am here. I don't know. So this will help in our children and our women, and I can share this information to them so they can actually motivate again to make them to understand their own life to other life. So that's my one of the things. Another thing is actually every woman should know about the health and should know about their sexual life and why they are actually for what kind of the situation they are living in, and how they can actually know about their own rights, their own bodies. Every father and mother has to teach upon to their bodies and the parinam. So that is very important. We are actually learning every day in the schools for the plants and then animals, how it is producing other plants and animals, but we are not actually learning our own health and how we are producing other person. So that is very important. What is actually in between there for some issues like HIV and then Hep C, that is actually we have to understand, and our life, our thing should improve our life. If we are not understand, so our eyes are closed, we cannot actually lose our life again, and we have to come back and do better to others. So that's life only we are living in. Thank you so much. Ladies and gentlemen, first and foremost, I think it's very important that we give a huge round of applause to the human spirit and all the awardees and the recipients of Dr. Batra's Positive Health Awards. Of course, pun unintended, but Positive Health Awards. When I was young and I was growing, I used to always admire people who were intelligent. But as I grew older and I became wiser, I started admiring people who were kind, and I started admiring people who had this special talent and could talk about their special journey. So I guess this evening, like so many other evenings that I've attended, is dedicated towards human triumph, the human spirit, and people like you. We are really honored to be here. I really feel privileged that I got the opportunity to give you an award, and you have really inspired all of us here, and I hope that you have a great life ahead of you and will keep inspiring all of us. Thank you so much. I think what inspired me, apart from Kaushalya's, the evening would not be complete if I didn't invite my favorite auntie on stage. I don't know how many of you know that she's been a Miss India in her days. And she still epitomizes beauty and grace. So please join me. Aye, please. I'm also very, very happy that the friendship has gone to Generation Next. And 2 years ago, we had Sonakshi on stage here. And she's shooting today, she couldn't join us, but we have Love,
So please love, join us on stage. Karuna, if you'd like to come up as well. Kush is not here, but please tell him we miss him. So last year we started a special category called People's Choice Awards, and we picked 3 winners and we opened the voting to the World Wide Web. And let's watch the videos of these 3 contestants and then let us facilitate the winner. So these were the 3 contestants. I'm very happy to say that these stories are so touching that we got some great social media response. Now let's see who the final winner was. I think all 3 are praiseworthy, but unfortunately there can always be only one winner. Let's see who that is. Okay, तो क्योंकि पापा ने मुझे कहा announce करने के लिए, the winner of Dr. Batra's People's Choice Award 2018 is Mr. Vikram Agnihotri. Amazing story, extremely inspiring. Yes, of course. Thank you so much. I mean, this is really pretty amazing. You know, I'm reminded of my friends and a lot of people coming up to me and asking this question, like, you know, how do I do all these amazing things in spite of the disability? So my immediate reaction is always like, what disability? You know, because for me, disability is just a state of mind. It has nothing to do with the physical, you know, attribute. I mean, I'm doing pretty much everything that everyone does. I shave with my foot, I eat on my own, I dress up, I play football, I swim, I drive. So it's, I mean, I don't think I do anything different. It's just I do it differently. So that's, and of course, I think the real credit for all this goes to my parents, especially my mother. She's sitting there. So I really dedicate this award to her. Because had it not been for her efforts, I don't think I would have been standing here. And in the end, if I may just एक छोटी सी गुस्ताखी करता हूँ, मैं एक शेर बोल रहा था जो I think parents ने जो I would say हौसला दिया है कि भाई खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. So thank you so much, Dr. Batra, for recognizing our efforts, and thank you everyone. Thank you. Thank you, Vikram. Thank you so much. मुख्य मुद्दे पे आने से पहले एक दो ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, और ख़ासकर डॉक्टर बत्रा, नॉट ओनली इज़ अ फ्रेंड बट ही हैज़ बीन ए फैमिली फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड, जिन्होंने मेरा ग्रोथ देखा है फिल्मों में ख़ासकर, और फिल्मों से लेकर आज तक, बल्कि मैंने भी इनका ग्रोथ देखा है, और इन्हीं का वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर एंड वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर एंड वर्दी फादर्स वर्दी सन अक्षय भी सामने की पैदाइश है. इसलिए इनके पॉजिटिव हेल्थ शो पे एक दो ऑब्जर्वेशन कर दूं. एक तो ये ग्रेट ओपेरा हाउस, इतने इसके चर्चे हुए, इतनी इसकी तारीफ हुई, क्या क्या बातें यहाँ नहीं होती थी. मुंबई जय महाराष्ट्र की ये पहचान है, ये
सही मानों में शान है ये। और इस शान, आन बान और शान ओपेरा हाउस में आज मुझे पहली बार आने का मौका मिला है, एंड दैट टू फॉर सच एन कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव इवनिंग। यानी डॉक्टर बत्रा के इस पॉजिटिव हेल्थ शो के लिए, अवार्ड्स के लिए आज बुलाया गया और मैं आया हूँ। दरअसल मैं आई एम ऑन वे टू नेपाल। मैं दिल्ली से ख़ास इसी फैमिली फ्रेंड और इसी क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव इवनिंग के लिए आया हूँ। दरअसल मैं कल नेपाल जा रहा हूँ और वहाँ पे जो टॉपिक है मेरा वो है गांधी जयप्रकाश एंड मॉडर्न इंडिया। इस टॉपिक से मेल नहीं खाता है, लेकिन ये टॉपिक जो है मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। खासकर अभी जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तब से ही नहीं, बल्कि उसके पहले से जैसे मैं एंटी टोबैको कैंपेन बहुत करता रहा। एक ज़माने में मैं खुद सिगरेट पीता था, इसलिए ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में मिसेस बुजवानी की बात पे आना चाहूँगा कि मैं खुद पहले सिगरेट पीता था, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि टोबैको बिगेस्ट किलर है, ये टोबैको जो है दुनिया में खासकर यंगर जनरेशन को तबाह कर रहा है। हेल्थ ऑफ द नेशन इज वेल्थ ऑफ द नेशन को ये चरितार्थ नहीं करता है टोबैको। तो मैंने एंटी टोबैको डे पूरे दुनिया में जब मनाया जा रहा था, उसी दिन डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, एक प्रॉमिस के साथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ मैंने छोड़ी। आज तक शुरू नहीं की और उसके बाद उसके बदले कुछ और भी शुरू नहीं किया, और मैं साथ साथ एंटी टोबैको कैंपेन करना शुरू किया पूरे देश में, विदेश में, शहरों में और गाँव में। इसलिए कि जिस कैंसर का जिक्र किया ऑब्जर्वेशन नंबर 2 मिस्टर बुजवानी ने, उसको समझते हुए मैं कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम पे भी जाता हूँ। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम पे जाता हूँ देश के कोने कोने में, और मैं महसूस करता हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन ही नहीं है कैंसर, बल्कि साथ साथ इमोशनल बर्डन भी है। इसके लिए लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग से पहले फैमिली के अंदर में वो शक्ति होना बहुत ज़रूरी है जो उसको अंडरस्टैंड करें, समय पे पहचानें। और समय पे पहचानने के साथ साथ मैं आज की शाम विद काइंड परमिशन ऑफ डॉक्टर बत्रा ये कहना चाहूँगा कैंसर के मामले में, मैं उम्मीद करता हूँ ऑल माई लर्नड फ्रेंड्स वुड एग्री विथ मी दैट मोर देन 70% कैंसर टुडे they say is curable. If not curable, then 30% cancer today is certainly controllable. कंट्रोल कर सकते हैं आप बनिस्बत की सही वक्त पे पहचान कर लें और सही डॉक्टर से सही इलाज शुरू कर लें। आज वो हुआ नहीं है, इसलिए इसका पॉजिटिव टॉक होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिवली भी समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में, खासकर आज की शाम जो हुई है यहाँ पे ओपेरा हाउस में, ये दरअसल शाम जो है सिर्फ हौसला अफजाई की ही नहीं है, ये बधाई की शाम नहीं है, बल्कि ये शाम डिटर्मिनेशन की है, कमिटमेंट की है, अचीवमेंट की है, सर्वाइवर्स की है। ये शाम जो है वो गजब की हौसला अफजाई की है, सबको प्रेरित करती है, सबका हौसला अफजाई करती है कि वही अगर आपके अंदर कन्विक्शन है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर लड़ने की शक्ति है, अगर संघर्ष करने की क्षमता है, तो आप इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल करते हुए इन पंक्तियों को चरितार्थ कर सकते हैं कि दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। आप कर सकते हैं। और मैं इसके लिए बहुत डॉक्टर बत्रा का जो हर साल करते हैं, अक्षय का और आपकी पूरी टीम का बहुत ही आभारी हूँ कि इतने नेक, सुंदर, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव कार्यक्रम में बुलाया। मैं इस प्रोग्राम से अपने आप को आज जोड़ते हुए, कल मैं गांधी जी की और जयप्रकाश जी की बात परसों करूँगा नेपाल में, आज उनकी याद में, और ख़ासकर आज 26/11 की कल शाम थी, और 26/11 में जो लोग उन पे जो गुजरी है उनको ट्रिब्यूट और सल्यूट देता हुआ, उनको याद करता हुआ, उनको प्रणाम करता हुआ, मैं आपसे वचनबद्ध होता हूँ कि ऐसे किसी कार्यक्रम में अगर मेरे आने से कुछ इजाफा हो सके, मैं अगर और थोड़ा बल दे सकूँ, तो निसंदेह संकोच याद कर लीजिएगा, आज के रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न होने के नाते हर हाल में आपके साथ हूँ, आपके साथ था और आपके साथ रहूँगा। पॉजिटिव हेल्थ शो के तमाम अवॉर्डीज को, आप जैसे लोगों से जिनसे मैंने भी आज बहुत सीखा,
बहुत लोगों ने प्रेरणा हासिल की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके परिवार को भी, आपके समर्थकों, प्रशंसकों को भी, और जितने अवार्डीज आज यहाँ हुए हैं। जैसे एक बात जो जनरल साहब कह रहे थे, और जनरल साहब ने एक बात कही कि लड़ाई लड़ी जाती है और कारणों से, वैसे एक दो बातें और भी कही कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मैं कहना चाह रहा था कि आजकल खासकर मी टू के ज़माने में behind every successful man's fall also there is a woman। तो ये इस बात का ध्यान रखें। पर एक बात और भी उन्होंने कही थी जनरल साहब ने, और वो ये कही थी कि लड़ाई जो है सही मायनों में अस्त्र और शस्त्र से नहीं लड़ी जाती है, वो लड़ी जाती है हौसले से। हौसला बुलंद होना चाहिए, ये आप कर सकते हैं, कन्विक्शन होना चाहिए। मेरी आज की यही दिल की बात है, क्योंकि इस घड़ी में मन की बात तो कर नहीं सकता। मन की बात पे तो पेटेंट राइट किसी और का है, तो मैं तो सिर्फ दिल की बात कर सकता हूँ, और मैं समझता हूँ मेरे दिल की बातों को आप अच्छी तरह दिल से समझ गए होंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉन्ग लिव डॉक्टर बत्रा एंड फैमिली, एंड लॉन्ग लिव पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Thank you, Uncle. May I please request you all for the finale now to please rise for the national anthem. Zayed, can I have you on stage, please? Come and join us. Any of the awardees still here, please come and join us. Devika ji, I think you're there, please come and join us. Sumit, Farah, Ambika, Shekhar ji, please. Ashish, please. Mr. Yogesh Lakhani is here also here, who's been a great supporter of us for so many years. Please join us. Dolly ji, Kiran Shantaram ji, Riman, Zoha, Ara, Farah, where are you? And for the national anthem, Ambika, for the national anthem we have a very special performance by the children from the specially abled Rochiram school. They cannot hear, they cannot speak, and they will perform the national anthem in sign language for us today. Please, the Rochiram school, please join us. Riman, are you there? 12-year-old. Taruna, please join us on stage. Riman, come down. Zoha, Ada, please join us quickly. You'll have to run.
Thank you, ladies and gentlemen. Good luck, good health, and good night. मॉनिटर दिखा मेरे को। हाँ चल, क्या हुआ? इवेंट ऐसा इवेंट था, ये हमारे लिए एक जर्नी थी। भले एक जर्नी हम सबब से आए हैं टाउन की तरफ, क्योंकि हम टाउनी नहीं, हम यहाँ पर आते हैं। तो डॉक्टर बत्रा जी के साथ पुराना रिश्ता है बहुत सालों से, और इनके हर इवेंट्स और हर फंक्शन हम अटेंड करते हैं। तांडव से शुरुआत हुई महाकाल की, महाकाल जर्नी शुरू की इन्होंने हमारी। उसके बाद जा कर के ख्वाजा जी का जो ब्यूटीफुल दे कोरियोग्राफ्ड वेरी वेल। मैं म्यूज़िक पे जाऊंगी, शुरू करूंगी म्यूज़िक से। जो म्यूज़िक एक इनकी जान है डॉक्टर बत्रा साहब के और उनके परिवार की, दे लव म्यूज़िक। एंड डॉक्टर बत्रा जी बहुत अच्छा गाते भी हैं, आपको हर साल आप लोग आते भी होंगे फंक्शंस के लिए। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो स्पेशल पीपल जो हमारे स्पेशल पीपल हैं, वो सिर्फ स्पेशल पीपल नहीं है, ये इनको परमात्मा ने इनको भेजा है दूसरों लोग की भलाई करने के वास्ते। ये सिर्फ आप वो मत समझिए कि इनको तकलीफ है, ये तकलीफ में नहीं है, ये गॉड के मैसेंजर हैं। जिस तरीके से भोजवानी जी कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत सारा अपना एक जागरूक जो हुई, उसके बाद जो एड्स के लिए महिलाएं जो वो कर रही हैं, इतनी महिलाओं के लिए जागरूकता अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। हमारे समाज में अवेयरनेस की आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, और ऐसी अवेयरनेस हमें करनी चाहिए। ये समाज, ये प्लेटफॉर्म, ये जो यहाँ पर आज हम पॉजिटिव अवेयरनेस, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन हिंदुस्तान हमारे में, एक्चुअली नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इंसान चाहे तो आज की तारीख में हम चांद तक जा रहे हैं। तो ये स्पेशल पीपल है, ये गॉड के मैसेंजर हैं, ये आए हैं भला करने। उनमें से एक हमारे डॉक्टर बत्रा जी हैं, जो इतना मतलब दिल से, मैं तो ये चाहूँगी सोशल नेटवर्क में ये इवेंट के बारे में, डॉक्टर बत्रा जी के बारे में, और ये इवेंट को और जागरूक किया जाए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और बहुत सारे लोग फंड्स के मामले में अगर जो मदद कर सकते, जो फालतू आप लोग के पास इतने ढेर सारे पैसे पड़े, प्लीज़ यहाँ आके पॉजिटिव अवार्ड्स में आप आके अपने, आप मंदिरों में आप जैसे जिस तरीके से आप क्राउन बनाते हो सोने का, ये करते हो वो करते हो, आप इन लोगों के लिए क्यों नहीं करते हो? इन लोगों के लिए करिए, आप पैसे यहाँ डालिए, आप उनको, आपकी पैसों की जरूरत है। भगवान तो आशीर्वाद आपको तभी देगा जब आप पैसा आप यहाँ दोगे और लोगों की मदद करोगे जहाँ जरूरत इंसान की है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जिस तरीके से हमारा ये एक जर्नी रही अभी शुरुआत, हम सब एक हैं, एक मैसेज था, एक गाने के तौर पे एक मैसेज था, बहुत तरीके से दिल को छू गया, इंस्पिरेशन आता है। अब मैं आपसे मुलाकात करती हूँ, अब मैं ये भाषण दे रही हूँ, मैं आपको लगेगा मैं भाषण दे रही हूँ, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। मैं बहुत इंस्पिरेशन हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच्चाई ये है भैया, पैसे दीजिए, मदद कीजिए लोगों की। हमारे यहाँ डॉक्टर पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड्स का आप इसको और बढ़ाइए, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष अपने निजी फायदे से नहीं, आउट ऑफ द वे जा करके उन लोगों की, स्पेशल लोगों की मदद करती है। तो आप भी इसमें साथ दीजिए। दिस इज माय मैसेज टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dolly. How's it to be here? How's it to be here? Such an easy question, right? Difficult answer. And not yet. I just said, when positive people, get together for a positive award that brings about positive change with, people who are absolutely blessed in one way and not blessed in another, but teach us, so-called normal people, what our own shortcomings are. It's a real treat to be there. I don't know how many people are so consistent with this every year after year, and I want to really thank Dr. Batra and Akshay for, always being so brilliantly consistent and highlighting these very important moments and milestones in our lives, where we understand that, what is the true worth of living? What's the true worth of appreciating each other? What's the true worth of, understanding that one must go above and beyond petty, shallow incidences. So I'm thoroughly touched, always, as usual, and I'm very happy to be here. So, in a very short answer, it's always a pleasure. Yes, thank you.
जी, thank you. Thank you. Thank you very much. Thanks, Ed.